Hello, friends. Hello, how are you? Welcome to Candid Conversations, where three friends get together for a fun chat um, with some conversations, sometimes deep, meaningful, full of humor, but definitely a trip down the lane of nostalgia. But before we go ahead, before we start the show, let me call upon my two very important co-guests, co-hosts for the show. Uh, to start with, this person that I'm going to call upon first, she is very entertaining. She's already on the screen. She's very entertaining, very talkative. She does. You might have seen her on Reels, TikTok, and oh, did I mention the exercise videos? Okay, Um, bus. Devika Hi Mehta. guys. Hey, Hi, Devika. hi Rusbe. Hello, hi. It's so nice to come on screen back again and with Indian Weekend. It's so exciting, right? It is exciting. It is indeed. But let's call upon our other host. वैसे अगर दबंग मूवी ऑकलैंड में रिक्रिएट होने वाली होती, रीमेड होती, तो ये बंदे को डेफिनेटली चुलबुल पांडे का रोल मिलता. A very funny, humorous, witty, and a sarcastic guy. Please welcome Saurabh Singh Thakur. हाय 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 बहुत हाय बहुत हाय. धन्यवाद इतने जो आपने तारीफों की बारिश कर दी लेकिन ब्रो तूने जो अपना इंट्रो तूने स्टार्ट किया ना ऐसा लग रहा था कि मतलब बोलते ना कि आदमी जब तैयार होता है अपने होल्डिंग द हॉर्सेस जैसे ही पर्दा खुला अरे गाइस वेलकम बट वेरी नाइस रुजबे ग्रेट टू बी बैक विद यू बोथ एंड स्पेशली ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक इंडियन वीकेंड Absolutely. So, Definitely. guys, today it's our first episode, Candid Conversations. Basically, the idea is three friends get together, have a random banter about things that affect people the most and affect you the most. So, if you're tuning in right now, please comment kijiye, message kijiye. We want to know you're there. So, yeah, please feel free to put in your messages there. But today, what we're going to talk about is, and I think we all have been through that, it's about student life in New Zealand. मतलब दिस इज लाइक कॉमन बिकॉज आई थिंक हम तीनों आई थिंक ऐसे मुझे लग रहा है हम तीनों न्यूजीलैंड में जब आए थे वी केम लाइक Yes. स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट्स राइट सो आई थिंक दैट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल थ्री ऑफ अस सो आई थिंक सबका समवॉट एक्सपीरियंस सिमिलर ही होगा Actually, पहले let's rewind a little. हम लोग मिले कैसे? हम्म Like, how did we actually end up meeting each other? Let's share that story. And I think the common line is here. You know, uh, the platform that we are on right now. या 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 राइट या सो आई थिंक जहां ब्रो से हमने स्टार्ट किया था इट वाज इंडियन वीकेंडर ने हम तीनों को मिलाया था एंड वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग ये सौरभ, तेरा क्या स्टोरी है? तुम मेरा लोग स्टोरी दोनों का कुछ तो भी कॉमन है ना? नहीं, क्या हुआ? तीनों अरे में हाँ, कॉमन है. वो क्या बोलता है ना कि पार्क इन जैसे बोलते हैं ना पार्क इन अगर एक छोकरे में कुछ तो है। तो ऐसा हुआ था इंडियन वीकेंडर के मिस्टर दिवाली में। आई थिंक आप लोग दोनों मुझसे पहले थे और फिर मैं वहाँ पे आया एंड देन दैट्स हाउ वी गॉट टुगेदर। हाँ, तो तो इंडियन वीकेंडर का जो ऑकलैंड दिवाली होता है, उस ऑकलैंड दिवाली में एक मिस्टर दिवाली, मिस दिवाली शो होता है, जिसमें देविका थी. कौन से साल में थी देविका? मैं 2016 की विनर थी 2016 के विनर थी. यस सौरभ नहीं, मैं 2017 में सो पार्ट बेसिकली लिया था. 2016, 2018 एंड 2017 पार्टिसिपेंट यस। फटाक से बोल के खत्म हो जाने का ना हाँ, ऐसा होता है कि नहीं यार बहुत हाँ, लोगों को मैं देखा मैं ऐसा छुपा लेते हैं सैश में कुछ लिखा होता तो खाली दिखा के हमें देखा एंड ना after a couple of years it is just about posting that photo with a sash and a cup ना हाँ, who हाँ, remembers who एग्जैक्टली. कब yeah. तेरा बैकग्राउंड में तू रखने वाला था ना आज. अरे यार मेरा वहां पे थोड़ा मैं ना साइड में रखा हुआ है आजकल बहुत बुरी नजर लग रही है उसके 2 बार गिरा थे वो दिखाने के बाद और जब जब तेरे को दिखा तब तक गिरा है वो तब तक साइड में रख दिया उसको पॉलिश करके राइट, ओके. सो या 2018 का विनर सौरभ सिंह जीता था. और देविका ने हमको मेंटर किया था वो टाइम पे. आई थिंक तुमको भी मेंटर किया था. एंड दैट्स हाउ यस आई थिंक वी ऑल केम इन कांटेक्ट roughly. या या दैट्स ट्रू um, या but okay, talking about student life, तो मैं I have been in New Zealand as a student. Like मैं जब ये पहले आया था, I think it's been over 9 years now. I came as a student. तुम लोग भी student से ही आए. यस हम क्योंकि ऑब्वियसली यार क्योंकि नहीं नहीं बोल 90s के सौरभ बोलते ना अर्ली 2000s के बाद वो कैटेगरी बंद हो गया था ना कि पहले आप अपना परमानेंट करवा के आ जाओ तो सब एक ही रास्ता बचा था पाथवे टू रेसिडेंसी का तो वही सब झोला लेके चल दिए और क्या Controversial issues नहीं बात करेंगे हम लोग, लेकिन सौरभ, तू कौन से साल में यहाँ पे आया? What year did you come in? यार मैं मेरा साल और दिन दोनों बहुत खास है तो मैं Okay. ओके 2014 में आया था 14 फरवरी 2014 को
वैलेंटाइंस डे अपना पे आया पूरा तो यहाँ सामान पे। दिल लेके उड़ा था मैं एक दूसरे अनजान कंट्री में किसी को देने को, तो बाकी सब तो चला गया, बस बाकी एक मेरा दिल मेरे पास पड़ा हुआ है अभी तक। ओ या तू, हम्म, आई मीन तू भी 2014 में आया था, मैं भी 2014 में आई थी। व्हाट ओके, अबाउट यू रोजबे? 2012। ये 2014 का ही बैच का ओह जो क्रीम बैच बोलते हैं ना, हर एक कॉलेज स्कूल में क्रीम यस, बैच होता है, दैट्स तो 2014 वाले बैच था, जितने भी करेक्ट आए सब जीत के एकदम। निकले मिस्टर दिवाली मिस दिवाली। 2012 हाँ से तुम लोगों ने सीखा और 2014 में जाके तुम उभरे। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली वी वो जो लेड बोलते द हैं ना, फाउंडेशन फॉर यू। एग्जैक्टली जो कच्चा नींबू नहीं होता है गेम में, एक दो बॉल डॉट बॉल खेलने के बाद असली मैच चालू होता है। तो हम लोग ने वो तुम्हारे लिए कच्चा नींबू खेला वो बॉल। हाँ यार, थैंक यू रुस्बे, थैंक यू नहीं, सो मच। बट anyway, so we are talking about student life, so just in general, how was your student life यार? मतलब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कैसा था तुम्हारा सीन? देख, मैं इंजीनियरिंग से होके मैंने 1 साल जॉब की थी इंडिया में और फिर यहाँ पे आई थी। सो इट वाज़ अ लिटिल बिट मिक्स्ड थिंग फॉर मी, क्योंकि एकदम पढ़ाई में जाना वाज़ समथिंग डिफिकल्ट भी, और ऐसा लग रहा एक्साइटमेंट में थी कि भाई इंडिया से यहाँ आ रही हूँ, पढ़ने के लिए आ रही हूँ, तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास। तो वो बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स थे। हाउ वाज़ योर्स? आई मीन आई डोंट नो इफ आई शेयर द सेम एक्सपीरियंस विद यू टू। हम्म, हाउ वाज़ सौरभ, योर्स? तेरा कैसा था यार? मेरा, तू अरे तो यार मेरा ऑकलैंड में तो नहीं था ना? नहीं, मैं हैमिल्टन में आया था यार। सोचो एक मुंबई से शहर से ओह! उठ के हैमिल्टन जाना, व्हिच इज़ नॉट बैड इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, बट वो बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट और डिफरेंस था। और खास करके बॉलीवुड ने फॉरेन लोकेशन से हमारी इस इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की है। खास करके जो हमारा टीनेज और एडोलेसेंट एज होता है, जब लड़के निकलते हैं, क्योंकि सैफ अली खान से तो हर एक गोरी लड़की पड़ जाती है मूवी में, तो एक परसेप्शन ही वैसा होता है। तो जो दोस्त होते हैं ना, कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाई पढ़ाई पे ध्यान देना, वो खाली माँ-बाप बोलते हैं इतना खर्चा करके जा रहा है तो थोड़ा आउटपुट लेके आ, नहीं है बाकी इसमें भाई मचा देना। मैं मचा देना बता रहा हूँ तेरे को, बहुत मजा आएगा उधर पे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को तो याद है, बस या मैं सलाम नमस्ते मूवी देखी थी और सलाम नमस्ते मूवी देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया था। मैं सलाम नमस्ते में बेसिकली सैफ अली खान ऑस्ट्रेलिया में होता है और वहाँ हुँ, पे वो हम्बर हम्बर करके वो हाँ, प्रीति जिंटा होती है। उसको वो खुद को सैफ अली खान को खुद को ऑस्ट्रेलिया में इंडियन मिली थी। तब हाँ क्या एक्सपेक्ट हाँ करो ना फिर आप हाँ यार, मतलब है कि नहीं? या बट मतलब ऑल उनका इन एक्स ऑल, नहीं, नहीं, बोल, बोल, बोल। बोल, 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 बोल। ओके, नो, बट बोले ऑल इन ऑल पहले आप। सैफ अली खान ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, बट उसने पार्ट टाइम जॉब्स भी किए थे। तुम लोगों ने पार्ट टाइम जॉब्स किए थे या नहीं, ये बताओ मेरे को? पार्ट टाइम तो किया बिकॉज़ था यार, लेकिन पार्ट टाइम उसके जॉब्स पहले मैं इज़ उसके ऊपर टच करता हूँ कि ये जो हाँ, जो बोलते हैं ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, तो जैसे ही आप हुँ, उतरते हुँ, हो तो हुँ। सबसे पहले मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा तू पहुँच गया, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, आँसू अभी तक सूखे नहीं होते हैं। और पापा का फ़ोन आता है, उनके दिमाग में चलता रहा साला ईएमआई चालू हो गया इसका यार, पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ना सबका अलग-अलग रियल एक्सपेक्टेशन होता है, तो अपना भाई-बहन जो छोटे हमारे कज़िन्स होते हैं, भाई-बहन होते हैं, उनको लगता है हुँ। गिफ्ट क्या आएगा, नया वाला आईफ़ोन आएगा कि नहीं? इधर आप सोच रहे हो साला रहने का जुगाड़ नहीं है, खाने का जुगाड़ नहीं है, आदमी करे तो करे क्या? और दोस्तों का फ़ोन आता है तो उनको लगता है एयरपोर्ट पे उतरते ही मचाएगी नहीं, मचाएगी नहीं। बोला ऐसा बट मैं तुम ऐसा बोल रहे हो कि खड़े होते हैं एयरपोर्ट के बाहर लोग, आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, ऐसा थोड़ी है यार। But tell me one thing, was it easy for you guys to get back to studies suddenly in a different country? Because मेरे लिए first 6 month was really difficult to concentrate on my studies. तुम टू बी लोग को ऑनेस्ट कैसा था? मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग स्टेप था ये, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिया में ना बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लाइक बिलो एवरेज। सो फॉर मी इट वाज कि आई हैड टू प्रूव इट टू माय फैमिली। मेरी फैमिली यहाँ पे भी है और मेरे पेरेंट्स ने पहले से ही मेरे यहाँ पे फैमिली को बोल दिया था कि ये बहुत निकम्मा लड़का है, इसको पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया था मैंने। और इट वाज एक्चुअली क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने पार्ट टाइम जॉब नहीं किया था, जस्ट टू आंसर योर अर्लियर क्वेश्चन। Oh नो my पार्ट टाइम जॉब। God! यार सो My फोकस्ड हो। God! वेरी मतलब फोकस्ड। for first 6 months मैंने सच्ची में मैंने भी पार्ट टाइम जॉब नहीं किया था, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट एज इजी एज व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे वी वर पैम्पर्ड, आसपास मॉम डैड थे, ये बिल्स भरो, वो बिल्स भरो, अपने डैड सारे बिल्स भरते थे। यहाँ पे आके लिटरली अपना टैक्स खुद करो, अपने लाइट बिल्स खुद भरो, अपने वाटर बिल्स खुद भरो, एंड दैट्स द रीजन आई वाज स्टूडेंट मतलब लाइफ में तेरे को 6 महीना जॉब नहीं किया तो कौन सा टैक्स भरी थी तू? ए बाबा, आईआईटी जैसे यही नहीं करना पड़ता। व्हाट मैन! बिल्कुल, बिल्कुल। बिना ये मैंने इनकम के भाई भरा टैक्स, था। ये पहली हम इंडियन है स्टूडेंट लाइफ में जो बिना इनकम के टैक्स भरी है। देख भाई, बिना इनकम के नहीं, जब पार्ट टाइम हाँ, हुआ तब तो टैक्स या भरा, बट आईआईटी नंबर तो मैंने उसी दिन किया था जिस दिन मैं न्यूजीलैंड पहुंची थी, बिकॉज बोला गया था हम लोगों को कि आईआईटी नंबर भरो, ये और करो। यार बट अपने स्टूडेंट अपने इंडियन होने का फायदा ये होता है ना कि अगर हमारा एक काम ना क्या बोलते हैं ना, अगर ए साइड से नहीं होता तो हम ट्राई करते बी साइड से हो जाए।
तो ऐसा मेरे हाँ। साथ भी हुआ था कि मैं बहुत सोचा था कि अभी आया हूँ, इतना ना सब कुछ हुआ है, तो मैं थोड़ा फ़ोकस से पढ़ाई करता हूँ। बहुत ईमानदारी से ना टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था मैं, 20 मार्क का टेस्ट था। हम्म। और फिर 20 मार्क से मुझे इतना पढ़ाई कर रात भर जाग के मैंने अच्छे से उसको, इकोनॉमिक्स का पेपर था आई रिमेंबर, और मैंने शिफ्ट किया था इंजीनियरिंग टू फाइनेंस। तो वो करके मैंने वाह। अच्छे अच्छे से पढ़ाई-वढ़ाई की, एवरीथिंग आई फिनिश्ड दैट बुक, और मेरे को 20 में से आए थे 4 पूरे क्लास में। तो मुझे बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है, तो बोला कि जुगाड़ क्या है इसके अंदर? तो एक चाइनीज़ वेबसाइट होती है शायद बायडू, तो ओके। उनके पास जो आपने सोचा भी नहीं होता वो भी उनका गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो क्या बात पहले कर रहा मैं, है? और मैंने मास्टर स्टूडेंट को देखा, वो सीधा अपना मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस को सीधा कॉपी पेस्ट करता था, उसमें आंसर सामने से आ जाता था। क्या बात कर रहा है? मैं सोचा ओह! बेस्ट है यार, बाकी तो उसके बाद यार ये भाई मेरे को बता देता मेरे यूनी के टाइम में, मेरे को ये सारी चीज़ें 95% के पता ही नीचे नहीं आया भाई को सबमिशंस में उसके बाद कभी। मेरे को एक नहीं। चीज प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को इंडिया में आदत थी कि असाइनमेंट अगर मिला है तुमको करने को तो वो छापो कहीं और से, राइट? यूजली हाँ, ऐसे होता था। ऐसे लोग करते थे, मैं मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो एक सीन था कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज एपीए रेफरेंसिंग। या हाँ, वो हुँ। टर्निटिन में वो जाते तुम्हारे असाइनमेंट्स और चेक होता है कि तुमने कहाँ से क्या छुराया है, क्या ढापा है। प्लेजरिज्म बोलते हैं उसको। Plagiarism, हाँ, plagiarism is what is amounts to it, but हाँ, Turnitin is the software where it goes to या find out if या you've plagiarized. या So या basically वो मेरे को वो एक adapting होने को थोड़ा टाइम लगा था। हुँ। हुँ, हुँ, But हुँ। I think you अपन Indians थोड़ा जुगाड़ ढूंढ लेते हैं हर जगह, क्रैक हो हाँ, जाता है। उसका जुगाड़ भी ये हुँ, है हुँ। रुज़बे कि अगर यू टाइप इट आउट, आप कहीं से उठा लो उसको, ठीक है? गूगल ट्रांसलेटर में उस लैंग्वेज को करो चाइनीज़ में कन्वर्ट, फिर उसको करो अरबिक में, एंड देन यू कन्वर्ट हाँ इट टू हाँ इंग्लिश। हाँ हाँ तो हाँ। उसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इतना सेट हो जाता है ना कि जो प्लेजरिज्म का रेशियो होता है वो 30% के नीचे आता है, व्हिच इज़ द पासिंग लिमिट। या तो मैं वो इसके सॉर्टेड साथ बट कर ये भी दिया। कहना आई चाहूंगा, रिमेंबर हाँ, हाँ, बोल, बोल। सॉरी जस्ट इन बिटवीन। तो गाइज अगर आप देख रहे हो हमें लाइव अभी, तो प्लीज आपके भी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स हमें बताइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, या फिर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट हाउ योर एक्सपीरियंस हैज बीन स्टडीइंग इन न्यूजीलैंड, व्हाट वर योर चैलेंजेस, प्लीज शेयर देम इन हुँ, हुँ, कमेंट्स हुँ। सो दैट सरकार राज ने भी अभी भेजा है, सौरभ तेरा प्रोफेसर भी देख रहा होगा। कोई बात नहीं, उसने भी ऐसे सो निकाला है पास होके। आई रिमेंबर स्टूडेंट लाइफ में एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से ये करती थी कि पैसे बचाने कैसे हैं। तो जहाँ पे फ्री मील्स मिलते थे, आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में एक बाजू में ही एक चर्च रहता था। सो एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे को वहाँ पे फ्री मील होता था। सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं सुबह उठ के क्लासेस को जाऊँ और शाम का लंच, सॉरी दोपहर का लंच मैं उस चर्च में जाके करूँ, बिकॉज़ इट वाज़ फ्री। या सो आई वाह। एम क्योंकि प्रिटी श्योर कि ऐसा तुम लोग के साथ भी हुआ है वो कहीं ना लंगर कहीं। लंगर होता है ना, लंगर में कितनी बार जाके लंगर तो खाया है। गुरुद्वारा जी में, हाँ, क्योंकि मेरे साथ हाँ मैं अब ना थोड़ा वी आर अ लिटिल कॉन्शियस कि कहीं पे कुछ फ्री मिल रहा है एज़ एन इंडियन, जब हम इंडिया में होते हैं कि यार मैं लाइन लगाऊँगी कि नहीं, तो यहाँ पे देखा काफ़ी कोई लाइन लगाए हुए थे यार दबा के। तो हाँ। मैंने भी उसके वो हुँ। डन उस दिन के बाद से पूरा शर्म जो है उसको पानी-पानी कर दी। कि हाँ, कोई टेंशन नहीं यहाँ है पे उस दिन। एक्चुअली सौरभ, रवि कहता है कि सौरभ हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स। गाइस प्लीज या ऐसा मत करो, देखो अगर सौरभ के ट्रिक्स एंड टिप्स वापरोगे तो ऐसा बनोगे। ऐसे तो बनोगे मतलब मिस्टर दिवाली बनोगे तुम, मिस्टर दिवाली बनोगे, यहाँ बात करोगे नहीं, एक दिन। मिस दिवाली भी ऐसे अच्छे से बनी है, baidu.com से नहीं बनी है। अरे यार ओके। वो सब, लेकिन यार पार्ट टाइम की अपन बात करते हैं। पार्ट टाइम में हाँ। जैसे होता है ना कि आप, आई एम श्योर रिजेक्शन तो सबके होते हैं, तो यार मुझे लगा था पार्ट टाइम, यू नो वी हैव टू डू ऑड जॉब्स एज अ स्टूडेंट हियर, तो इट इज हम्म। अ लिटिल ईगो हर्टिंग व्हेन यू कम फ्रेश फ्रॉम इंडिया। हाँ तो हाँ। मेरे को बोला कि किसी ने बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू कर ले, एवरीवन डज इट, कोई जॉब बड़ा छोटा नहीं होता। उस टाइम पे बहुत लोगों ने रेस देख ली थी रिलीज होने से पहले, कोई धंधो छोटो न थी और धंधे में वर्क और धर्म न थी। बोला ठीक है भाई, तो मैं चल दिया। बोला तो एक बर्तन मांजने का जॉब आया था। मैं बोला थोड़ा-सा कॉन्शियस था मैं जाऊँ कि नहीं? छोड़ कर लेते हैं कुछ दिन, तो गया और रिजेक्ट होके आ गया। मैं बोला बर्तन धोना है में भी मैंने, मेरे पास बर्तन धोने का भी स्किल नहीं है यार, और उसमें कुछ करना भी नहीं था, डिश वॉशर था, वो फाड़ के उसमें डालने का था। तो उस दिन मैं बड़ा बहुत ऐसा ऐसा फीलिंग आया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं आता है और मे बी शायद सोसाइटी के अलावा कुछ है नहीं मेरे लाइफ में और। ओह शिट तो फिर मैंने नाइस। अपने आप को होल्ड किया। बोला ऐसा नहीं है, देयर माइट बी समथिंग बिगर एंड बेटर फॉर मी। सो हर एक अकाउंटिंग स्टूडेंट का सपना होता है ना टू वर्क फॉर बिग 4। बिग 4 पता है ना आपको, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई और वो जो है। पीडब्ल्यूसी। तो वैसे ही हर एक स्टूडेंट, इंडियन इमिग्रेंट स्टूडेंट के लाइफ में एक बिग 4 होता है, व्हिच इज़ मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग। तो मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब लग गई थी। तभी मुझे लगा था आई एम मेड फॉर समथिंग बिग। ऑसम। बट आई तो थिंक बट
पार्ट टाइम जॉब्स आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में हमने सिखाया है कि कैसे सेविंग्स करते हैं, कैसे ये करते हैं. इट वाज जस्ट अ फाउंडेशन फॉर आवर व्हाट वी आर टुडे नाउ. Yeah, ओके, yeah. वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन उसके पहले आई जस्ट वांट टू क्विकली टॉक अबाउट अकोमोडेशन. तो तुम लोग के साथ अकोमोडेशन में क्या सीन हुआ है? हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मोस्टली स्टूडेंट्स फेसेस, कि यार रहना कहाँ पे, अकोमोडेशन कैसे करना, और फिर उसमें भी कि किसके साथ बनती है किसके साथ नहीं बनती है, ये वो. सो व्हाट वाज योर स्टोरी, सौरभ? सौरभ क्या स्टोरी का पिटारा लेके बैठा है क्या? मेरा तो बहुत स्टोरी था. इट हैज बीन रियली रियली गुड फन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, एक जो कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं, वैसे तो काफी कुछ दिखाई देते हैं यहाँ पे आने के बाद, बट विद डिफरेंट पीपल दैट यू आर एंगेजिंग विद. इंडिया में, मुंबई में रह के जो इतना मल्टी कल्चरल बोलते हैं उस चीज को, यहाँ पे आके उसका 4 गुना 10 गुना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ जाता है, बिकॉज यू पीपल यू आर लिविंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड समटाइम्स वर्ल्ड एज वेल. तो बहुत सही होता है सबका एक Yeah, थिंकिंग थॉट and प्रोसेस मिलना. plus नेक्स्ट. India, yeah. So where we come from, India में it is not common कि girls और boys साथ में रहते हैं यहाँ पे. ओ It या, was like a culture shock for my parents कि boys and girls are living together. I was like, पैसा बचता है ये guys. ऐसे ऐसे लड़कों के कारण ऐसा हुआ है. कैसे लोग पैसा, उसने खुद बोला पैसा बचता है. हाँ. So, but I saw that gradual change in my parents' thinking as well कि हाँ. मतलब like ठीक है, they are managing, we can trust them, ये वो. तब जाके it was pretty normal to stay कि boys and girls साथ में रहना. या ठीक है. तो कूल. चलो, इसी बात पे अभी हम बुलाते हैं, टाइम आ चुका है कि हमारे आज यहाँ पे गेस्ट आए हैं. ये जो गेस्ट है, दे आर इनटू समथिंग रियली वेरी यूनिक. They are very creative. I'm not going to take much time, but we've got Ollie and Varun from Roti Bros. Hey हेलो. guys, Hello. welcome, Hello, hi welcome. guys. Namaste. How are you? Great, Ollie, how are you? Very well, thank you. Very well. We just had a big day cooking, so we're still in the kitchen that we're at, and thought we'd log in and have a chat to you guys. So awesome. So now I want you to let our viewers know. So what is Roti Bros about? Yeah, cool. So we make pies made with roti paratha as the pastry. We make generally from Indian and Southeast Asian sort of flavors and cuisines. We've got 3 main flavors: butter chicken, Thai beef, and vegetarian Penang, which is technically vegan. But what we've got going at the moment is we've got a Diwali celebration pack of 9 mini vegetarian roti pies, which Varun has been working on. Nice. Wow, Oh, that's pretty cool. Yeah, Lovely. looks That's pretty. quite beautiful. So Roti Bros. Okay, I'm pretty sure there's a story behind this name. What's the story, bro? Yeah, well, with it being such a new product, and it's almost created a new product category similar to a standard pie. But because it has quite a unique point of difference, we wanted to represent the essence of the pies within the brand name. And so I suppose by doing that, when we've got such a powerful and well-known word as roti, me and one of the co-founders, Logan, we thought, we're just a couple of bros. Let's just put it all together, because it is really powerful to have that. Because of the roti pie, which is such a beautiful product, and we do get a lot of people that commonly associate the brand name with the product, so it is quite powerful and strong to do. That's And amazing. Yeah. whereabouts do you sell this? We got a few different channels of distribution. We're quite active at events, obviously not at the moment, but through Faroes, all Faroes around Auckland, and we've just started selling online as well. Awesome. Lovely. Last go. Varun has something to add. Yeah. Yeah. What is that, Varun? No. I mean, apart from Faroes and online orders, we do in Lastigal market, which is in Panel. Oh yeah. And we do sell in Clevedon markets as well. I mean, obviously, this is level 3, level 4 restrictions going on. But So did this idea, like I'm just trying to understand, are you guys a food technologists or something which suddenly came up with such food ideas, is it?
Yeah, We are because food. she's one and looking for a job. Oh, Yeah. you guys are foodies. That's Yeah. lovely, man. Yeah, so Devika is a food technologist, or Yes. what? Yeah, food technologist Yes. on the Yeah. side. And Not on she's the side, looking for actually. a That's the main job, job. looking for a change. I am a food technologist, so just wondering why didn't I get this idea? Yeah, yeah. Yeah. She's an expert taster also. She does tasting and Yeah, also. Yeah, I'm you a can. panelist. I'm a panelist in Sensory. Yeah. Oh, really? Oh, Yeah. yeah. Likewise, anything free food. Yeah. Extremely tasty. I've got awesome taste buds. Trust me, guys. And I've also developed a tagline for you. What's the tagline? Having roti, bro, makes you grow. Yeah. See, physically, mentally. Right. Yeah. Okay. So, Ollie, while you're here, and Varun, for you also. So, we've spoken about Roti Bros, but I just want to ask you about the topic that we were talking about, student life in New Zealand. So, Varun, have you studied in New Zealand, or what's your Yes. story? I mean, I've studied back in 2014. I've studied cookery, so I'm a chef by profession. Uh, Wow. yeah, I mean, I've studied 2014, finished in 2015. I was working as a chef from last 5, 6 years. So you had your own challenges. Were you relating to what we were talking about? I mean, I was laughing while, I was translating the whole stories, what Oh you yeah. guys were talking about to Ollie. I was like, this is typical, like, when we were students, Hmm. all Yeah. Yeah. those things, what happened. And Ollie, what's your story? Like, have you are you from New Zealand originally? Have you traveled around? Yeah, from Hawke's Bay originally, and spent a year traveling in Europe after school. Then went and did a bit of Southeast Asia. Studied in Dunedin for 4 years, and when you were talking about going to the Takanini Gurudwara For free lunches. for free lunches, it reminded me of when in Dunedin we were going to Hare Krishna. We were getting Oh, very, ISKCON, I guess, right? Yeah. The temple name is ISKCON, Hare Krishna. yeah. yeah. We're getting $3 lunches there, and very appreciative. But we also we went with Kawal to the Takanini Gurudwara recently, and yeah, amazing place, beautiful food as well. Awesome food. Yeah. Yeah. So now, Yeah. going back to Roti Bros. So if you have to explain it to a 10-year-old why they should go for Roti Bros, what would you say? To a 10-year-old, Yeah. You put him in the spot. maybe the mini pies for them. No, the reason I ask that is because, like, a lot of times we use very flash words, and some words that, like, we don't even know the meaning of, like the listener doesn't know the meaning of. So something that is very, like, very simple, but As of something that. what, Rusbe, as of what I could conclude from Roti Bro is having a great combination of an awesome taste along with the nutritious benefit of it. Because roti, as we all know, is wheat, which is not as bad as usual maida or maybe a Exactly. white flour, which basically used in the pies that we get in the supermarkets and And commercial. actually it's really good for like people, like people who I mean, very picky about eating food, especially Indian roti and sabzi. It's like a really flash dish. Okay, you guys want pies, pasta, pizza, that's for you. So it's like a complete and, package of and, and you guys would be nutrition food. yeah, you guys would be remembered in history because the concept of biryani. Well, I'm not honest about it because the concept of biryani originated from the Mughals, and the way it was done, it was a quick, nutritious, and good, healthy food that used to fill you up, and that is what Roti Bro does too. Nice. A lot of Hmm. mums would be happy with Roti Bros, because in this way, as Devika said, like, children usually don't want to have roti sabji. So in Hmm. this way, Yeah. they're having the roti pies, so they're getting the nutrition, and they also feel that they're having a pie. Fancy food. Hmm. Yeah, Nice. it's very convenient, and but it's also, we make them with, well, we partner with our suppliers who make all of our fillings for us. Hmm. The roti comes from Malaysia, so they're made with really good ingredients, and I suppose that was the one thing that, living and growing up in New Zealand, I love pies, but there's so many pies that are just made with crap ingredients. They're terrible, and like floury gravies and just like a little bit of meat and doughy and Hmm. and so Yeah. when we came across the idea of a roti pie, it was
was like, how has no one done this before? We need to share in this. We need to celebrate this, and so partnering with the likes of, we partner with Surti. They do the yogurts and samosas, Oh yeah. and Hmm. so they make a couple of our fillings, and Paper Plane, who are a new sort of food supplier, they make a couple of our fillings as well, and then we buy the roti prata from Malaysia. an importer who gets it from Malaysia. And so what you've got is a much thinner pastry than standard pie pastry, and really nice ingredients. And we've tried to keep it within Thai, Malaysian, and Indian cuisines, because there's just so many beautiful flavors you can incorporate with those. So now with Roti Bros, what's your vision? Yeah, so we want to continue to grow the way we have been growing. A lot of business models don't really accommodate for how we're doing it. It's kind of, scale in a mass way, get machinery, pump out a whole lot of pies and sell them. But we think it's better to kind of break it down a little bit, and so we want to look to branch out to the likes of Wellington, Christchurch, possibly Sydney, Melbourne, Brisbane. And the way that we do that is we effectively take what we're doing now, and we go and do that in Christchurch. So we go and set up with some local food suppliers down there, and they make our fillings for us. And we buy some locally imported roti from down there. So it's quite a good business model, because you can kind of sort of copy and paste it anywhere, and it helps kind of local businesses thrive also. Right, awesome. That's very Nice. interesting. No, on that note, I just we are almost there. We're going to end, but just one last. So for the Diwali pies, where should someone go and get those Diwali pies? And how many pies does that consist of? Does that consist of 9 pies? Is it or? Yeah, it's a pack of 9 mini pies. I Hmm. mean, it won't take long, but the whole idea of creating that particular box is to revisit all the classic, I would say, Indian street food flavors. And we are doing three different type of flavors. One is Manchurian, which is quite popular in India, and originally it is from Indo-Chinese fusion cooking. Second flavor is bhaji. So bhaji pie came out of pav bhaji, as we all know. Wow. Like pav bhaji is from Mumbai, so I just thought of experimenting bhaji mix in the pie, and the end result was really good. Really good. Yeah. Nice. And the third one is Matar Paneer. And the idea behind launching Matar Paneer was, I mean, I thought Matar Paneer is quite popular in India, but popularity wise, no one really knows Matar Paneer in New Zealand. So rather than touching base with the same old paneer like paneer tikka masala or paneer butter masala, let's try to do something different with paneer. So Nice. and the taste is really nice as well. Mm. That's awesome, yeah. Great Hmm. stuff, guys, and wish you all the best. Hope to see you again on the show with some roti pies, and hopefully after the lockdown we can have it together and munch it all together. Sure. Um, Yes. but thank you, All the guys. best. All All the the best. best. Thank you so much for coming along. Thank It you was a so pleasure much. to have you guys. Thank you. Yeah, Thank you very thank much. you. Yeah, Well, खाएंगे हम भी रोटी पाए, अभी के लिए टाटा बाय बाय. well, kalti marne ka time aa gaya hai. So Yeah. on that note, we are going to say bye, guys. It was fun to do this, guys. Every Thursday को हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और हम बात करने वाले हैं different topics के ऊपर. So we want you to be there. Also, there is an option for you to participate in this show. All you have to do is send us your messages. You can email it to Indian Weekender, or you can email it to यहाँ हमारे को फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो आपका क्वेश्चंस, एंड we'll tackle them here. Yeah. And if you want like us to talk or rant about something on our show, तो नीचे comments में या message कर दीजिए what topic do you want us to touch. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए उसके लिए भी आप हमें कर सकते हैं Yes, मैसेज. exactly. इसी बात पे सौरभ कुछ कहना चाहोगे आप जाते जाते? हम जा सकते हैं. नमस्ते. Thank you so much, guys. It was fun, Yeah. and stay tuned to Indian Weekender for more such fun gossip, banter, different shows, different variety. Enjoy life. This is me, Rusby, signing off for now. Bye. This is me, Devika, signing Bye. off. Bye.